Hello, everyone. Welcome to my podcast, The Pondering Vista. Our today's guest is Mr. Abhishek Chavan. He is one of my best friends, a man of many talents. He is one of the smartest and the most creative guys I know. Join us as we take a walk through what Abhishek thinks about the source of creativity, various ideas he has picked up from some of his favorite books, how the motivation of a single guy changed the lifestyle of an entire group, and many other things. So, without further ado, ladies and gentlemen, Mr. Abhishek Chavan. So, Yeah. you are a very creative person, Okay. Yeah. uh, objectively more creative than most of the people I've met in my life. You have met So, most of the engineers. yeah, true. So, All yeah, right. what do you think creativity is as a trait? Like, is it something that is acquired after you are born through your upbringing or through your friend circle? Or do you think it is something that is built into your genes that you are born with? Some people are just born creative. Interesting. So, अगर मैं उस तरह सोचूं कि Mm-hmm. if someone is born in terms of creative or is a more like a smart guy who can solve some particular problems, I feel it's basically the kind of environment you grow in. Mm-hmm. Maybe if I would talk about in my perspective, it's maybe that I was very much genuinely into cars. Maybe because how beautiful they looked, and Mm-hmm. um, these machines, I didn't care what exactly was there inside. Maybe the bodywork was something that was very fascinating for me, because as a child, of course, you wouldn't see the engine, the top True. or anything, so you will be seeing the outside of it. And I feel because of that, I was like, yeah, why can't I imitate that bodywork, on pen and paper. तो वो Mm-hmm. ट्राई करता था, पेंट में बनाता था, नहीं बनती थी, अच्छी नहीं बनती थी, बट कुछ कुछ हद तक बन जाता था चीज़ें। Mm-hmm. सो आई थिंक वो चीज़ फ़ैसिनेट करती थी, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें रेप्लिकेट करने का ट्राई करता था, जो रियल लाइफ़ में उसको पेन एंड पेपर पे बनाना या पेंट में बनाना, Mm-hmm. जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ परमानेंट पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। Right. So, So yeah. that repetitive thing might have maybe pushed me towards a bit of creative feel. Mm-hmm. So, like the childhood passion towards a certain type of object or a certain kind of art, you Hmm. think will push people into creativity or like increase their creativity. So basically, it's not something hard coded into you. No, no, I don't think so. I think if I was never shown these kind of things before, I Mm-hmm. would have ended up just like some other guy, in like which might be a very non-creative guy. Maybe some other चीज में अच्छा होगा, but not sure कि if I would have gone to creative side. देखो Uh, वही चीज नहीं है. I used to get birthday gifts. उसमें भी there used to be toys, most of the toys. And mhm. again, I used to be fascinated, like कि ये भाई दिखता इतना अच्छा क्यों है? Like why exactly I'm being pull towards this. Okay. Couple So of things. maybe, हाँ, Uh-huh. yeah. ऐसे ऐसे है ना कि this is one good thing you can do always to see what it is कि like if you were born in a different household like to different parents अगर Hmm. कहीं और पला बड़ा होता तो Hmm. do you think the same amount of creativity you have now you would have gotten? Doubtful. Ah, I I wouldn't say yes to that, because again, those small parameters is what makes you today who you are, right? correct, correct, correct. Ki what you have seen, what you have heard, what you have felt is what something that makes you a particular person. Hmm. And the second you change the environment variables, of course तू अलग आदमी बनेगा with अलग interest, सब में अलग अलग tweak रहेगा वो. बट लाइक कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं ना लाइक फ्रॉम बर्थ दे आर लाइक वेरी स्मार्ट और लाइक फ्रॉम बर्थ दे आर लाइक सुपर क्रिएटिव और ऐसे डाविंची या फिर पिकासो you Hmm. think अगर तू if you were grown in the household where Picasso grew up, Maybe I would have been pushed into painting. yes, but would you क्या तू पिकासो जितना अच्छा बनता?
Not sure, no, not necessarily. But if he was painting at 10 level, I would at least paint at 6 or 7. Hmm. The 6 or 7 level of Picasso is still very good, I feel. Yeah, yeah, obviously. It's like वो बोलते हैं ना कि you are sitting around businessman, you're talking about this particular amount, so at least you will be earning this particular amount. ऐसे बोलते हैं ना कि यार Ah, वो बंदा 1 करोड़ का सोच रहा है तो तू if not anything 30 लाख कमा सकता है. That's how people correct, talk, no? correct, 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 correct. So I feel environment does matter, like where you are born, whatever happens. I don't know. See, I'm not sure about the genius part, how exactly it works, and something. Creative is very intuitive, compared Hmm. to smartness. Smartness is something, of course, कुछ लोग होते हैं. That Hmm. also I feel comes with life experiences. एकदम से ऐसे नहीं आएगा, hard coded नहीं आएगा कोई चीज. Hmm. And agar you're talking about that smartness of IQ and stuff, that is something I'm doubtful about. I'm not sure what exactly how it works, No, no, I'm but talking about this artistic creativity, like to write a poem or to yeah. draw a painting. Yeah. Hmm. So most of the people who are like into painting or digital arts Hmm. and this thing, so I feel these people see life in a very different way than the normal people. Like I wouldn't say they are not normal. Like in the case कि एक पर्टिकुलर तूने बताया अभी पोएम के बारे में, ओके, पोएम Hmm. के बारे में कि यू माइट सी अ थिंग एंड देन यू नो रोमांटिसाइज दैट पर्टिकुलर थिंग. सम Correct. पीपल डोंट. वो देखते हैं यार एक चीज है, इसमें क्या है. True. I think the way you see the life also makes shapes you that particular way. Why are you the questions that follow is why exactly are you seeing in that particular way? क्यों तू उसको इतना रोमांटिकली देख रहा है, क्यों उसको तू इतना ब्यूटीफुली देख रहा है, क्यों ग्रेसफुली देख रहा है, Hmm. वो चीज भी मैटर करता है. और वो उसके क्वेश्चंस का आंसर इज समथिंग दैट माइट लीड यू टू योर आंसर. Hmm. Correct. दैट इज Like, व्हाट आई. जैसे तू बताया, like childhood में used to see cars, get fascinated, बर्थडे गिफ्ट सब आते थे तेरे को. I mean, like most kids, like small kids, get cars and stuff during their Yeah. birthdays and stuff. But the way you saw cars and got passionate about it, and the other kids who Why just do, exactly and then did that like, intrigue in me? yes, 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 उसका आंसर इज समथिंग yes, इवन आई डोंट इवन नो. yeah, yeah, है ना, yeah. वो कोई एक Makes sense. डेफिनेट आंसर नहीं है. Correct. Makes sense. Makes तो sense. नॉट श्योर, मे बी कुछ रहेगा साइंटिफिक लेवल पे, बट Hmm. उतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है. Hmm. आज भी Something कोई to चीज say. देखता हूँ, आई सी एनी गुड काइंड ऑफ बॉडी वर्क, और लेट इट बी बाइक, कार, और एनी काइंड ऑफ मशीनरी, Hmm. इन जनरल कोई भी चीजें हो जो एस्थेटिकली थोड़ी ज्यादा अपीलिंग होती है, Hmm. they seem to be more attractive, compared to normal things. Yeah. Yeah. The eye to see what is aesthetically pleasing and will be pleasing to others also. Hmm. That eye is, yeah, true, that true. that that is something, because either others matter, because at the end of the day your artwork should be seen by other people, and and you should make an artwork that should be pleasing to the most of the eyes out there. Correct, correct. तो वो भी एक चीज मैटर करता है. Mm. Can we talk about your journey from a kid who received a car on a birthday and got passionate to media heading one of the greatest fests in South India? I didn't basically handle the fest, वो तो भी रेमन ही कर रहा था. True, मैं but तो I then was just a part of that team, so I would have contributed a bit to it. I'm pretty That sure Hiramani took heavy inspirations from you. I'm not arguing that Hiramani is not a creative person, of course. But yeah, I mean, you guys are in like two pillars who carried the media part side of that whole वो बोल fest. सकता है, दैट इज इट कि he did, like he had the leadership to do it. I was more like a worker kind of guy कि कुछ काम मिला I used to do it, वैसा था. तो Right. मेनली I'd say कि I'm not sure. See, बचपन में मैंने बोला कार मिला था, अगेन उसके साथ मुझे बस भी मिली थी. Best. दैट इज समथिंग यू गाइस नो, कितना पसंद है बस का मैंने, ठीक True, है. true. I I see agree. again. I see Volvos. I am like, भाई ये कितनी अच्छी बस है. Why exactly I am seeing that? Why Mhm. exactly you guys are like, भाई इसको बस देख के पसंद क्यों आ रहा है ना? True, That true. I think that is something that used to trigger in you guys कि भाई ये एक Volvo की बस देखता है चुपचाप खड़ा हो जाता है एक जगह हमारे पे. लिए तो डब्बा है बस वो. हाँ, for you Yeah, guys it's a yeah, डब्बा. yeah. True, true. I don't know, मे उसका साउंड अच्छा लगा, वो दिखने में ह्यूज है, मे बी इट अगेन थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर दिया कि इट्स वेरी ह्यूज, सम ह्यूज मशीनरी इन अ Mhm. ब्यूटीफुली कवर्ड मेटालिक शीट. वो इतना इतना पावरफुल है कि इतना जा रहा है यहाँ से यहाँ. तो Mhm. एंड
इट्स नॉट नॉर्मल कि आगे एक पहिया है पीछे एक पहिया है, ये बहुत असिमेट्रिकल है, पीछे दो पहिया है तो वो अलग वाला फीलिंग आता है। आई डोंट नो, वो चीजें थी ठीक है। एंड राइट राइट। तो पहली बार आई थिंक ये बसेस जो भी स्टार्ट होती थी वो जब हम शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में थे तब चल रही थी ठीक है, मल्टी एक्सल ये सब अभी स्टार्ट हो रहा था। एंड वो टाइम में मेरे पास पहला पहला पीसी आया था घर में, वो सीआरटी नहीं होती। राइट राइट। एंड हाँ, आर्ट क्लासेस में कोई भी मेरे को टीचर बोलता था ड्रॉ समथिंग व्हाटएवर यू लाइक, मैं बस बना के बैठ जाता था तो यार लिख देता हूँ चल। एंड ये होता था मेरे साथ। ओके, सो देन व्हाट हैपेंड, देन स्लोली आई गॉट द पीसी एंड आई एम लाइक व्हाई नॉट, लेट्स लर्न पेंट सिखाया था कंप्यूटर क्लास में। सो आई लाइक लेट्स डू दैट and I tried whatever was there on the sheet. I tried to replicate the same thing on the paint. It looked way more definite. The colors were like good, way better than the paper ones. So I used to do that and show it to my father. My father used to pretend कि भाई कर रहा है यार, creative तो है, but he used to see कि है कर रहा है कुछ तो creative कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बस ABCD पढ़ते बैठा है एक कोने में। वो तो करना ही पड़ता था, वो थी भाई, चाय पानी वही थी हर दिन। I mean, Asian kids, what can you do? Exactly. That is something we can't avoid. वो करना पड़ेगा, but this was something धीरे धीरे वो चीज बनता गया। Every art class I was either drawing a Porsche or a Volvo. अब ऐसे ऐसे होता था एंड देन वी बॉट आवर फर्स्ट कार अपनी फैमिली ने, अराउंड 7th स्टैंडर्ड में था शायद या 8th स्टैंडर्ड में कुछ था, मैं तब ली थी। एंड दिस वाज वेरी अर्ली एट द एज। तो पहली बार मैं अपने फ्रेंड्स को बता रहा था यार हमने कार लिया i10 ठीक है, एंड मेरा एक और फ्रेंड बोलता था हाँ अभी ऑल्टो है हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ स्लोली वी गॉट इनटू मशीनरी साइड थोड़ा सा कि क्यों कार ये अच्छी है, क्यों कार वो अच्छी है। एंड फिर मैं ज़्यादा कार्स जो कमर्शियली हमारे रोड पे घूमती है, हैचबैक्स होती है ना छोटी सी, वो ज़्यादा देखने लगा, वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होगी। एंड आई यूज्ड टू ड्रॉ दोज कार्स ऑल्सो। अब ऐसे ही अपनी i10 बना के पापा को दिखाता था अपनी कार बनाई है, एंड यूज्ड टू बी हैप्पी कि यार कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे आई फाउंड ब्लेंडर। दिस वाज अराउंड 9th स्टैंडर्ड। मेरे फ्रेंड ने गलती से एज अ वायरस दे दिया था, एज अ वायरस नहीं, इट्स समथिंग, एक अजीब सा फाइल था, उसको मैंने बोला था भाई कॉल ऑफ ड्यूटी डाल के दे, उसके साथ उसने ब्लेंडर वाली फाइल भेज दी ठीक है। लाइक ब्लेंडर कौन सा गेम है, थोड़ा भूल के देखते हैं। .exe फाइल थी हाँ। Nice. And I opened that. Yeah. What happens? देखता हूँ एक डब्बा है बीच में, क्या है ये? उस टाइम पे इंटरनेट नहीं थी घर में, हम लोग गुलबर्गा में अभी रिसेंटली अपने नए घर में मूव इन किए थे एंड वहाँ पे लैंड केबल्स वाईफाई कुछ नहीं था। तो मेरे पापा का वेट करता था, ही हैड द स्मॉल स्मार्टफोन जिसमें थोड़ा सा यूट्यूब चल जाता था डेटा से। एंड उसमें मैंने सर्च किया था कि व्हाट इज ब्लेंडर, लाइक खेलते कैसे। आई थॉट इट वाज अ गेम फर्स्ट। कुछ कर रहा है, कुछ तो ग्राफिक है, तो मुझे लगा हाँ है ये फोटोशॉप जैसा कुछ तो, दैट इज जस्ट फॉर द 3D साइड। लाइक या ट्राई करते हैं। Nice. And rest is history. रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद बस कॉलेज प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स में मस्ती करता था, यू नो दैट। Yes. थोड़ी सी चीजें सीखी, और पता है पहला मॉडल क्या बनाया था उसमें मैंने? बस Yeah. I genuinely show like if I had that thing, वो हार्ड डिस्क में यार वो करप्ट हो गई है। मैं दिखाना चाहता हूँ how bad that bus was. It was just a box with 2 cylinders. Nice. Yeah, the before after thing would be crazy. Yeah. So True. After that is something even you know like how exactly things have proceeded. There. I say it's just that I have kept the creative side alive maybe. I didn't let it go at any point. Every year at least there was a stretch of 2 to 3 months where I was somehow inherently into creative field. Yeah, either doing some Blender videos or like doing some other shit. Yeah, right. Even right now I am not gonna stop. Like तुझे भी पता है I'm working in a software field. Still I am like नहीं भाई बनाते हैं animate करते हैं. True. Passion. Yeah, passion. Yes. Let's switch up, change gears now and talk about fitness.
फिटनेस Hmm. मेरे बारे में पेट निकला हुआ है सर इधर अभी Yes. बैठ के स्ट्रॉबेरी का फज खाया हूँ See, मैं this is like I am telling a heavy body dysmorphia. You are. it does come. It's not about dysmorphia. I accept to a point that I do have a decent physique. Yeah. Again, it is something I am confident कि अभी इस point से मैं कहीं पे भी build कर सकता हूँ. Hmm. Right. Yes. Take us through your fitness journey, like just a timeline. First 2 months I was like this, and or like how many years you worked to get to your physique. Okay, so this journey would have started back during lockdown time, I guess. You know, Yes. कि lockdown was something that was, of course, सबके लिए बहुत sad time था, Yeah. and maybe a lot of people did progress well, but that was also a point where people had deteriorating, health wise. True. And I was one of the guys जिसके मुंह में पंप मार दिया था और मैं फुल गया था अच्छे से. वो पिक्चर्स आज भी दिखता हूँ, ऐसा लगता नहीं है कि यार क्या हो गया ये, मतलब हाउ एग्जैक्टली आई वाज एक्सेप्टेबल लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, ऐसा फील होता है कभी कभी. बट आई फील दैट वाज रिक्वायर्ड अगेन कि True. एक वो डाउनफॉल चाहिए थी हेल्थ में, कि इधर से अकल आना शुरू हो गया था कि नहीं भाई अभी हिलना पड़ेगा. अगेन इंटर्नशिप की टाइम थी है ना बिस्टा अपने टाइम में, तो दैट वाज द पीक टाइम वेयर आई वाज वेरी फैट. आई हैड chubby cheeks, बड़ा सा पेट भी था, अच्छा खासा fat arms, legs, and that was something that was very bad. तो मैंने इसे फोर्स कर करके बैंगलोर में एक जिम ज्वाइन किया था. Correct. ये जो ट्रेनर था he was like all sweet to me, but वो वर्कआउट बहुत ऐसा हॉरिबली कराता था. लाइक आई डिडंट लाइक टू रिपीट सो मेनी रेप्स. 50 रेप कौन करता है बाइसेप को ऐसा एक एक हाथ में. इट्स वेरी बोरिंग. गाने भी बोरिंग लगने लगे उस पॉइंट पे. मैं 2-3 महीना गया, मैंने छोड़ दिया. फिर हम शिफ्ट होते हैं हुबली, एंड वंस वी कम टू हुबली फिर इंटर्नशिप सीजन चालू होती है, एंड आई एम जस्ट ग्रोइंग फैट एंड फैट एंड फैट. Yeah, and then you basically submit your life to DSA. या डीएसए एक बार तुम करोगे तुम होगे भी नहीं. 3 बजे तुम्हें घोड़े दिख रहे होंगे. Flying घोड़े. फ्लाइंग घोड़े हुबली के रोड्स पे. So that was something, and later on, I think our college reopened, and I was going through a bad phase during that time. Even though I had secured an internship, from the relationship side it was all done, but it was something that aftermath, है ना, कि वो चीज रह गई थी कि maybe if not anything, I I should have always had a decent physique if not anything. वो पहले से ही था, but हाँ. Yeah. Get Jack boy. So it's like like I have to do something. Like it's not about getting jacked. It was like first भाई ये पेट निकाल. Yeah. How the hell can this guy be more than 85 kgs? Like एक I am just barely like 5'10", ठीक है, 5'9" 5'10" के बीच में हाइट है. उसके ऊपर मेरा पूरा BMI लगा हुआ था, उसके एल लगे हुए थे, ठीक है, वो तो कोई कोने में चला गया था. एंड वो सीन हुआ, कॉलेज ओपन हुआ. अभी भी मैं चीजों से रिकवर कर रहा था. एक बहुत बैड टाइम से गए थे. कुमार पर्वत का एक ट्रैक मारा, उसमें पूरी अकल आ गई, पूरा ऐसा लग गया कि भाई ना नहीं हमसे चला नहीं जा रहा, भागेगा कैसे आदमी. आई फील उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था. एंड one of the biggest falls happened during 31st December of 2021. Yes. And that was me falling into the gutter. On the New Year's Eve. Yes, on the New Year's Eve. I was walking. अब मैंने बिस्टा को बोली थी, बहुत बहुत बोला था मैंने कि बिस्टा तू देख अभी ऐसा जिम चालू करेगा मैं कभी रुकेगा नहीं. बिस्टा बोलता है अच्छा सही है. ब्रो सुबह कुत्ते होते हैं ब्रो. वो चीज बोलता था ये कि कुत्ते होते हैं कैसे जाएगा. बोला नहीं, इस पॉइंट पे जिंदगी में डरने का नहीं. इसमें कुछ है नहीं, अभी सब कुछ खो चुके हैं, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है. एंड उस रात मैं शावरमा देने जाता हूँ हिरमणि को, और मैं गिरता हूँ एक बड़े से खड्डे में. मेरे बाइसेप पे आता है खरोच, इतना बड़ा खरोच कि बाइसेप स्ट्रेच नहीं हो पाता है. और मुझे बिस्टा बोला, मुझे वो चीज याद भी है कि लाइक भाई जिंदगी में कुछ करना चाहो, भगवान उसी टाइम पे ऐसी चीजें करता है जो उसका ऑपोजिट होता है ना. मंजू मैम का क्या. तो बोला कि हाँ, तो मैं बोला शिट, मैं एक रात बैठा तेरे साथ ही था ना, मैं टॉकिंग ऑल दैट.
एंड नेक्स्ट डे इट वाज सम वियर्ड स्मार्क. उसके बाद तो हॉस्टल बंद हो गई थी. True. एंड देन Lockdown. हाँ, एंड एक दिन रीओपन हुई एंड आई वाज लाइक फक इट, आई एम गोना गेट अप, Mm-hmm. wear a shorts, wear a t-shirt, take my छोटू सा जिम का बैग, शूज डाल, निकल गया. निकल गया. और मैं निकलता हूँ सुबह के 5 बजे. Yes. वो होता है ना वो रैंडम स्ट्रीक ऑफ एनर्जी. मुझे लगा वो वही है कि 1-2 दिन करूंगा मे बी एंड आई विल Yes. स्टॉप इट. Yes. बट ये चीज थी कि नहीं यार, बिस्ता को थोड़ा तो गलत प्रूफ करना है. Oh, by to this day, I am very much blown away by that wave of whatever you had, man. Like Yeah. daily at 5:30 उठ के निकल जाता था जिम. मैं सोचा यार चला जाएगा, 1-2 दिन जाके आ जाएगा वापस, Even I छोड़ thought देगा. भाई बंदा गया बॉडी बन गई, रुक नहीं रहा, अभी तक जा रहा है बस. बस भाई आज वही तो, कल भी गया था, मजा आया. सबको. द थिंग इज हाँ. दिस स्टार्टेड आई थिंक ऐसा 2021 के एंड पे, मतलब 2022 में स्टार्ट हुआ होगा. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ. वी आर नियरिंग December, so I will consider almost 2 years में से 1.5 years constantly I would have gone. Yes. And so that day that happened, and I'll tell to everyone who might be starting out a fitness journey is भाई घंटा का कुछ कॉन्फिडेंस होता है जब तुम जिम में पहली बार जाते हो, एंड स्पेशली कॉलेज जिम में. यहाँ लौंडे बहुत सारे हैं, कोई भी है कुछ भी कर रहा है, तुम्हें आधी एक्सरसाइजेस का क्लू नहीं है क्या है, कौन क्या करता है, कैसा करता है, तुझे आज क्या वार्म अप मारनी है, क्या करना है, फर्स्ट डे पे कुछ नहीं पता रहता. तुम थोड़ा हाथ हिलाते हो, थोड़े वेट्स उठाते हो, you do something, that is the progress, that's it. Do the same thing on second day, do it on third day, fourth day, fifth day, sixth day. खत्म हो जा, संडे को सो जा आराम से, कोई बात नहीं, सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं. एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग. धीरे धीरे मेरे को हिरमनी भी देखते हैं, मेरा बोलता है यार चल मैं भी आता हूँ, मेरा कोविड का स्ट्रिक खत्म हो गया, अब जिम का स्ट्रिक चालू करते हैं. और वो भी रिकवर कर रहा था उसके कोविड से, एंड हम दोनों जाने लगे. अब चरण आता है, फिर मिस्किन अपने हिसाब से आता है. Yes. धीरे everyone in the gang started going to gym until late Ishan. Yes. Also. Yeah. This is what I love, man. This like random 5 a.m. motivation of some one guy. That's on One some guy. 10 gym addicted dudes now. 10 से ज्यादा है भाई, 15 लोग हैं, एटलीस्ट 15 है. बस मिस्किन को छोड़ के सब चल रहे जा रहे हैं अभी. He is the only guy who doesn't work out. True. Miskin, please go to gym. Go to gym, miskin. Yes. तो Yes. वो होता है. एंड आई थिंक उसके बाद it was fun because now since people started joining ना, it was there कि co-dependently you are there कि आज मैं 5-5:30 बजे अगर मुझे मन थोड़ा भी नहीं कर रहा है, बीरा उठा देगा मुझे. Correct. बीरा फोन करेगा, चल अभी आ रहा है ना, उठ जा. तो मैं लाइक ठीक है, करता है. Nice. ऐसे तो नाउ एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे. इस पॉइंट पे धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे कि सुबह 5 बजे जाना है. एंड नाउ द स्ट्रीक एरा कम्स ऑफ हेवी लिफ्टिंग. Okay. We start with deadlifts. It was fun to lift 60 kgs at start. Right. Squat at least 40-50 kgs. And bench also 40 kg. ऐसा 10 का प्लेट जब पहली बार जिंदगी में बारबेल पे लगा था, एंड अच्छे फॉर्म में मैंने बीरा ने 10 रेप मारे थे. वो दिन था कि समझ गया यार मजे हैं इसमें, हेवी लिफ्टिंग में है तो मजे. And slowly the next achievement would have been 100 kgs का deadlift, and Yes. it keeps going on and on. It goes to 100 kgs का squat also at one day. And then random streak of caffeine addiction and protein intake. सबको ज्ञान दो फिटनेस का, सबसे ज्ञान लो फिटनेस का, सबको जिम पुश करो. That was the next 2 years I'll say till date. Yeah. Still going on. We are still pushing Miskin to go to gym. Yeah, we still are. Yeah. So the main goal of your starting your fitness journey or like workout journey was to get in better shape. Like you weren't looking for strength or like to fight somebody or something like that. I just wanted to lose weight 55 to somewhere to 70, and I lost till 65. Extreme level पे. मम्मी एक गुब्बारे को जाते हुए देखी, बस एक धागा आया वापस. एंड शी वाज लाइक भाई क्या हो गया तुझे, इधर आ, बैठ इधर, खाना खिलाती हूँ. एंड शी समहाउ पुश्ड मी टू 70. उसके बाद शायद अपना एक ब्रेक लगा था समर का. अच्छा वैसे 1-2 महीना नहीं थे हम लोग. तो तब तक के लिए आई वाज बैक ऑन 70, बट आई वाज स्टिल रेगुलरली गोइंग टू हुबली का जिम है ना. नाउ एट दिस पॉइंट आई थिंक आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ जिम्स. इस पॉइंट पे मैं एटलीस्ट 10-12 जिम्स जा चुका हूँ आज के डेट तक.
अलग अलग जिम्स। एक Uh-huh. तो अनदर रीजन कि हाँ मैं पापा का ट्रांसफर होते रहता है, Uh, सेकेंडली अभी नाउ माई जॉब ऑल्सो अलाउस मी टू एक्सप्लोर मोर जिम्स right. than बिफोर। Uh-huh. तो द कॉन्फिडेंस दैट किसी को भी डर लगता है ना, कोई भी नया जिम जा रहा है यार, नया एनवायरमेंट है, नए लोग Hmm. हैं, पता नहीं कौन कैसा जज करेगा। दैट इज Hmm. व्हाट यू विल बी थिंकिंग, इवन आई यूज्ड टू थिंक, नॉट गोना लाइक, वेरी Uh-huh. ऑनेस्ट, कि Uh-huh. हाँ मैं उठाऊंगा, कोई मुझे आके बोल देगा भाई वो लिफ्टिंग क्यों कर रहा है, हो सकता है कोई बोलेगा आके तारीफ कर सकता है भाई तू पावर लिफ्टिंग क्यों कर रहा है, इवन दो आई एम जस्ट लिफ्टिंग 100 kg। वैसा होता है, वो Uh-huh. हुआ है दोनों Yeah. जिम्स में, दोनों तरफ मैं देख चुका हूँ। बट Hmm. आई फील इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे यू फील कि तूने कुछ अकॉम्प्लिश किया है आज के दिन में, तूने इतना रेप इतने वेट उठाना है और तूने कर दिया है, यू फील गुड Yes. अबाउट इट, दैट्स ऑल मैटर्स। उससे ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल रखने चीजों को बस। True, true. You look yourself if you are satisfied with your workout, best. या दैट्स Yeah. इट। या अगेन स्लोली धीरे धीरे जब ऐसा थोड़ा मसल्स आने लगा, द बेस्ट पार्ट वाज आई थिंक हाथों का वेन्स है ना। Hmm. वेन्स वाज समथिंग दैट आई नेवर सॉ इन माय एंटायर लाइफ। Hmm. लास्ट के 2 साल में मैंने वेन्स देखी अपने लाइफ में पूरी, Hmm. अपने ही हाथों के। Hmm. आज कुछ भी करता हूँ बस वेन्स ही वेन्स पॉप हो रहा है। इट जस्ट शोज कि कितना फैट रिड्यूस हुआ है True, दो true. साल में। Hmm. When do you think that change happened? When like suddenly one day you look in a mirror and you're like, "Oh, I look good." इट वाज रैंडम डेज ना, कुछ कुछ दिनों पे Uh-huh. यू हैव वेरी लो कार्ब इनटेक, Hmm. तो तेरे पेट में कुछ ब्लोटिंग नहीं होती है, ये नहीं होती है। दैट द डे व्हेन आई सॉ माय आई गेस फर्स्ट ऑब्लिक्स, अच्छे Uh-huh. से ऑब्लिक शेप हो रहा है। कूर्ग के टाइम में आई गेस, हम लोग कूर्ग ट्रिप गए थे ना, वहाँ पे लाइटिंग Uh-huh. अच्छी थी। Yeah, yeah, yeah. दैट वाज द ओनली टाइम आई गेस, पहली बार ऐसा लगा कि यार डैम, मतलब है तो चेंज तो हुआ है, Hmm. सा बस खाली प्लेन जगह नहीं है आगे छाती से पकड़ के पेट तक। शेप तो है कुछ। For context, this is in February 2022. 3 आई गेस, Yeah, to 23. Sorry, yeah. यही So साल का, it's यही like साल, around 1 year ऑलमोस्ट 1 ईयर। Yeah, almost 1 year later. Yeah, so 1 year later, and to this date इतना कुछ grow नहीं कर पाया हूँ। Maybe the shoulders are something that I'm still trying to work। अभी तो injury है, so I'm avoiding to work out on shoulders, बस Hmm. basic stretches चल रहे हैं। But I feel shoulders, your long head of triceps, Hmm. your core, your chest is what puts you in shape completely। Hmm. बाकी तुम डेडलिफ्ट मारोगे ना, तुम्हारा फोरआर्म अपने आप पंप रहेगा हर टाइम। Nice. Yeah. बाइसेप नहीं चाहिए वो ओवररेटेड चीज है, True, true, very true. हाथ में इतना छोटा मसल है वो. But छोटा मसल। that is like shown as the face of working out. No, like wherever you see Exactly. somebody working out or like some ad of some guy working out is usually him doing preacher curls on his thigh. Preacher curls, exactly, and that is how even I started। 50 रेप मारता था बाइसेप के, उनसे बड़े पंप हुए। Yeah. पीछे का एक दिन लॉन्ग हेड मार दिया मैंने स्कल क्रशर से 3 साइड, बस हाथ ऐसा लग Easy. रहा था कि फट जाएगा। Yeah. Good feeling. The Exactly, exactly, best feeling in the world is having very satisfying pump. true, true, that is that। That is something even I think even you also would have faced, right? कि True, true, from true. है ना कि तू भी I think last 4-5 months से तेरे you're going regularly, Yeah, yeah, if yeah. I'm not wrong, Yeah. and that also would have sparked in you। Right now you're in that start of journey to intermediate level के start पे आ रहा है अभी। Mm-hmm. अभी मैं भी I'll consider somewhere in middle of intermediate, अभी भी ऐसा extreme level पे गया नहीं हूँ। I do want to lift heavy, but at the same time I don't want to injure myself, and that is why to even increase a deadlift of 10 kgs it took me around 6-7 months, 7 months का time लगा मुझे। Mm. आज भी नहीं उठता है वो, एक बार मार दिया मैंने बस खत्म। एक दिन बीमार पड़ जाते हो, 20-30 kg फिर से ड्रॉप हो जाता है। तो वेट लिफ्टिंग इज समथिंग, बट या राइट नाउ आई हैव माय ओन बेल्ट दो, Ah. जिम बेल्ट। मैंने कभी नहीं सोची थी अपनी जिंदगी में खुद का जिम बेल्ट लूंगा, बट द फन फैक्ट इज जो बैग है ना वो छोटा सा, Mm-hmm. वो 3-4 साल से आज भी वही है। जो पहला मेरा जिम बैग है वो आज भी वही यूज करता हूँ मैं। Nice. अभी लेना पड़ेगा यार, बेल्ट बैठता नहीं है। बेल्ट बहुत बड़ा हो गया. बहुत बड़ा हो गया, Nice. पड़ेगा। Yeah. Yes, during this time of lockdown, and I think during lockdown or like after, once we came back to college, you had started reading books. What was the first book you read? Reading books, like Yes. during lockdown. What was the first one you read?
Rich Dad Yeah, Poor Dad. no, no, no. This was, I think, Psychology of Money was the first book. Properly, Oh, like, okay. yeah, yeah. Was there any other book that I would have read? मुझे याद नहीं आ रहा इतना. Uh, कौन सी book पढ़ी होगी? the Yeah, first the first I heard you speak about was this Rich Dad Poor Dad. हाँ, that I didn't even read complete book. वो तो आधा ही पढ़ा हुआ था. Oh, okay. I'll say जो पूरी book पढ़ी हुई है वो होगी Psychology of Money. Mm-hmm. And and after that the other book that I was talking recently, which actually would have transformed me in a bit about, thinking makes a person miserable. The Don't Believe Everything You Think. Don't build. Yeah, Right, about right. that. Uh-huh. Yeah. So Rich Dad Poor Dad was some random book that I read. वो 2 मिनट के लिए ऐसा streak boost किया कि यार it's very easy to do business and shit, but in reality it's something else. And True. yeah. So you asked basically, like, is there anything good that I found from these? Yes, please. Yeah. So Psychology of Money, I'd recommend it to the people who just want to be there in that middle class wala thing. Mm-hmm. Maybe to create a wealth while you have a very, having a very humble kind of, like, living below your means is what basically that book tells you to do. Right. तो तुम अगर पिज्जा खा सकते हो तो तुम आज दाल चावल खा लो. पिज्जा That का is पैसा what it बचा लो. says. Right. पिज्जा का उसका टैक्स बचा लो, उसके सर्विस टैक्स बचा लो. तो उस पैसे को इन्वेस्ट के बारे में भी उतना नहीं बात करेगा. ही विल जस्ट से Correct. कि सेविंग इज इम्पोर्टेंट. दैट इज ट्रू. Hmm. Saving is important to this point. Right now I am staying outside on my own expenses. Hmm. मुझे मन नहीं करता है कहीं पे खर्च करने का. दैट लाइफ humbles you down if not anything. True. शौक अपने आप बंद हो जाते हैं जैसे तुम बाहर आते हो. ऐसे ही पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं, वो भी जस्ट टू सर्वाइव. Right. सांस लेने और बस वॉशरूम जाने के लिए इतना पैसा लगता है अभी. मतलब खाना खा के जो तुम निकालते हो उसकी बात है. एंड पॉइंट वो है. इधर भी लेके आ गया वो सब. So that is, it takes a lot of money. I am living, like, even if I want to comfortably spend, it takes around 35,000 per month for me to spend and properly, have a good life at the same time. Yes. 35 is very huge amount. If you True. would have seen that from a college guy point of view, 5 महीने पहले 35,000 मुझे मिल भी जाते गलती से, मैं शायद बाली भी चला जा सकता था. अंकल ड्रॉप. अंकल ले चलो अंकल हमको बाली. मंगलूर के समुद्र में मजे नहीं है जो थाईलैंड में जाके. True. कहाँ पे बाली पता नहीं. थाईलैंड बोल. तो वो चीज है. एंड दैट इज समथिंग दैट आई सॉ कि उसमें दैट वाज वन फन थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि वो कार के बारे में, मैन इन अ कार पैराडॉक्स वाज समथिंग दैट वाज वेरी कूल, लाइक आउट ऑफ दैट एंटायर बुक. Yes. That was very real because again the start of this entire convo was about cars. For a guy who has seen cars, who has admired cars from the birth, उसमें एक ऐसा पेज, एक ही पेज था जिसने पूरा ईगो हर्ट कर दिया. कि when you see a car, you don't see the guy who is riding, who has owned it, who has worked hard to earn that car. You will see the car and you will be imagining yourself in the car riding Right. it. Correct. So the credibility is about the car, not the guy who is riding it. है ना? So you will be thinking, so if someday you buy a car, no one will be looking at you. Everyone will be looking at the car. Right. And I am like, भाई मैं भी वही चाहता हूँ, वो कार देखे. कार ही देखने चाहिए लोगों को. लोग क्रिएटिव हो जाते हैं. Yeah, it's not Chavan is riding a Ferrari, it's Ferrari going there. Yeah, it's Ferrari going there. That is that True. matter करता है, उसका presence matter करता है. And that is what was there, कि उसने इतना ईगो हर्ट कर दिया होगा. like लोग पैसे खर्च करते हैं just to have the शौक cars का. Of course भाई, मेरे पास अगर 100 करोड़ होगा तो 2 करोड़ खर्च करने में I wouldn't mind. Yes. 2 करोड़ रख के मैं 2 करोड़ की कार लूंगा तो वो पॉइंट नहीं है. Yeah, one of the things that Psychology of Money, मैंने I think I've read the first half of it or something. तो उसमें he tells there are no wrong financial decisions. Like people who thought कि yes सही डाल रहा हूँ मैं स्टॉक्स में, पूरा से वो करके किया, मस्त कैलकुलेट करके they invested, and people were dumb and like not very smart and invested in some dangerous stocks or something. And
the way history has gone, like you can't really predict how the economy will look like after 10 years or something like that. Hmm. Right. So what one of the things he is like mentioned very predominantly is there are no bad financial decisions. There is just some decisions you take, and the reality plays out, and you either get paid out or like this thing Right, happens. right. See, again, the name of the book is Psychology of Money. It's the Mm. same thing that goes around in human decision making skills also. True, true, true. No decision that we take is wrong. It Mm. is because the kind of, you know, Exactly. environment we have been. Yes, Again, yes, yes. सारी चीजें बचपन से पकड़ के आज तक तुम जैसे environment में हो, उसके Correct. हिसाब से you make your decisions. Mm. Some take very risky decisions. Some Mm. take very safe decisions. Mm. It you can't blame the guy just because he is a bit scared about a particular thing. He's taking a safer decision. कुछ आदमी आके बोलेगा यार रिस्की ले, कुछ बोलेगा यार नहीं safe खेल. And again, they are talking from their perspective Right, right. of their life. Right, right. Exactly. Yeah. ये हो गया लाइफ के टर्म में. This guy is applying the same thing on the money. Money कि side. Yes, yes. if I give you 10,000 rupees Vista right now, and Mm. if I give 10,000 rupees to myself, okay, Mm. I know how we both will use that 10,000 rupees. Correct. I know. Uh-huh. I might end up buying things. Yes. Might buy not just random things, but maybe something Yeah, that yeah. might be useful for me. Correct. But you would think not to spend that 10,000, है ना? Very true. Yeah, you would rather be like, ठीक है 10,000 रख लेते हैं, जब भी काम आएगा. If I want, I'll spend. That is how you are. Yes. I'll try to invest not in terms of financial investment. कोई gadget में डाल दूंगा या कोई चीज में डाल दूंगा जो मुझे help कर पाएगा. I wouldn't expect money out of it, but something that either comforts me or Yeah, lets just me raises do better your stuff. level of standard. Yeah, correct. Standard of living is different. That is something where you buy things where you don't even need. That is something. हाँ, जैसे अभी मैं जिस दिन पहली बार मैंने घर में मूव इन की, I didn't even place an order for mattress and I bought a computer table first so that my PC can be there comfortably. कि True. गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए. मैं फिर मैंने सोचा कि मैट्रेस लूँ. हाँ, मैं गटर में सो जाता हूँ. PC can stay. PC Yeah, has to चलेगा. Yes, yes. because PC has been one of the biggest investments. True. बहुत बड़ी डिसीजन नहीं ली मैंने. मैंने सोचा था मुझे PC चाहिए, ले ली मैंने. आज it is generating me a lot of money. True. जो भी आज मेरे खर्चे हैं, वो खर्चे रिकवर कर रहा है मेरा PC. Not gonna lie. अच्छा खासा. It's giving me back. I am taking gigs. I'm doing it for fun. Whatever it is. It is giving me money. True. अगर आज मैं वो डिसाइड करता कि वो है ना 2 लाख 1.5 लाख जो भी है उसको मैं बचा के रखता हूँ अपने पास, रहेगा आज FD में एक 20-30 हजार एक्स्ट्रा होके. I have generated more than that right now. Yeah, of course. So you should never feel bad when you're investing in something that can or might generate happiness or money. One more of the things that blew my mind in that book was how majority of lottery ticket buyers are not people who are rich and can just pay a 20 rupees ticket and take it. It is people for whom the 20 rupee actually matters. Those are the people who are actually majority of the people who are actually going and buying the tickets. True. That is that he says that is the only hope of the big dream of the very ideal life they would like to live. That is just a small window through which they can see their ideal life being played out. I mean, it's like an investment that can actually get you a lot of returns. Yes. And also there was this recent story ना, कहीं तो Instagram पे चल रहा था कि एक बंदा था जो slums of Mumbai से आया and his father just got a lottery ticket and suddenly they were living in a very hi-fi flat. They bought a hi-fi flat and they started living there. तो उसकी पूरी education change हो गई mid life में उसकी. स्कूल नहीं जा रहा था वो 4th स्टैंडर्ड की एज पे, एंड 4th स्टैंडर्ड की एज पे वो स्टार्ट कर दिया एंड नाउ ही इज इन दुबई एंड इन रियल एस्टेट. वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, छाप रहा है वो बेसिकली. तो यू सी हाउ एग्जैक्टली वन थिंग कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली. जनरेशन वेल्थ आ सकता है पूरा. सो व्हाई वुडंट यू spend 20 rupees and think about it? Of course it matters. But agar if it works out, lottery tickets are really good for changing the complete course of the heredity. Yeah.
Do you have any book recommendations? Yeah. The other book that I was talking about, Hmm. Don't Believe Everything You Think. That is Yes. one of my, I think, that is the only book that is very favorite, and I Wow. do remember everything about it. Hmm. So we as people do really actually think a lot. Hmm. I still do even after reading that book, practicing non-thinking well apart. Hmm. It is still somehow we are humans. At the end of the day, we do Hmm. think, if Hmm. not anything. Hmm. We are made to think, Yeah. and a lot of people put themselves in this miserable part just because they are thinking a lot. It's Hmm. very simple. एक Hmm. पानी है वहां पे Hmm. जो सीवेज वाटर से भरा है, Hmm. तेरे रूम में है, तुझे दिख रहा है वो, यू जस्ट चोज नॉट टू सी इट, दैट्स इट. Hmm. इट डजंट मैटर व्हाट इट इज. तुझे कुछ तो है एक ऑरेंज कलर का Hmm. कुछ तो दिख रहा है तेरे रूम में. यू कैन जस्ट सी आउटसाइड योर विंडो, देयर अ ब्यूटीफुल स्काई, मस्त ऐसा बिल्डिंग बिल्डिंग है, या तो तेरे पीसी में देख या डोर के बाहर देख. Uh, बट इफ व्हाई वुड यू इन योर राइट माइंड जस्ट सी दैट? अगर तेरे uh, पास ऑप्शन नहीं है उसको हटाने का, फिर क्या hmm. करेगा? Hmm. तो यू सी ना कि हाँ कहीं और देख. बचपन में भी डॉक्टर इंजेक्शन मारता था, कहीं और ही दिखाता था. Yeah. दर्द कहीं और हो रहा होता है. Yeah. सेम चीज चलती है अपने दिमाग के साथ. बस दर्द Uh, हो रहा होता है, पता है सबको, बट hmm. दिखना नहीं है. Hmm. या यही चीज है practicing the non-thinking. The best part about this was the focus or the in the zone वाला चीज that I read Hmm. about it. Full of Most of the athletes, hmm. we also, when we work out, there is a particular phase where we don't feel like talking to anyone, we don't feel like doing anything, we are in the zone. Hmm. This is the part I wouldn't ask you to be conscious, because you are not conscious, you are just there in the zone, Yes. thinking nothing but zero stuff, you're Hmm. thinking nothing, and you are just doing. तेरा body अपने आप हिल रहा है, चीजें कर रहा है. Hmm. This is the best part. That is why you feel good after doing something, like working out or running around, Hmm. because at that particular moment you're not thinking. Hmm. Hmm. And this thing has to be practiced in your entire lifetime, and I think most of the monks do try that. ठीक है, जितना भी बुरा जिंदगी है, you accept it कि Hmm. कभी ना कभी जिंदगी खत्म होने वाली है. स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगी. चीजें चलेगी अपने हिसाब से. जो चीज कंट्रोल हो सकती है उसके बारे में सोचो. Hmm. तेरे पूरे लाइफ में there might be 2 to 3% that you can control. The rest 97 is because of other things that is being controlled. Hmm. कोई किस तरह डिसीजन लेगा वो तेरा लाइफ ऊपर नीचे कर सकता है आज. True. True. बट तू क्या सोच सकता है जो 3% 4% तेरे हाथ में है, कि हाँ आज मैं खेलूंगा, या आज मैं जिम जाऊंगा, या आज मैं सो जाऊंगा, या Hmm. आज मैं गेम खेलूंगा, या मैं आज पढ़ाई करूंगा. दैट इज समथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट. True. True. Hmm. या सो पीपल डू थिंक अ लॉट. Nice. Yeah. So that book name is "Don't Believe Everything You Think." I'd recommend for Pretty sure. good book. Yes. I. And again, for the people like me who are very beginner in reading, Mhm. it's very small book with big font, very easy to read also. uh, तो फट से जैसा मन भी करता है कि यार बुक खत्म कर देता हूँ. fast fast page पलट पलट जाएंगे. Exactly. Now I have moved to this new book that is called as Mindset: Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential. Bye. It is by Dr. Carol Hmm. S. Dweck. Hmm. Hopefully, this book might be a good read. It was suggested by one of the seniors from an ITK. Oh. And yeah, he was like, do read it. It's mainly Mhm. about the mindset. And to be honest, यार इतना mental game है ना कि अपन क्या सोच रहे हैं क्या है, all leads to depression, all leads to these mental issues. True. 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 Like maybe something that is not diagnosed at the birth stage, जो चीजें आगे जाके develop होती है, जैसे depression. Hmm. So I feel all these can be tackled if you know how to practice it properly. True. 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 I mean, not much training in that division was given to kids, no? Like when we were young, or like when in Exactly. general, yeah, like not much awareness is there as to how big this impact will be. Exactly. And you're Exactly. just told to just study. I mean, That's just very go true. write exam. Easy अपना A, वही ना. easy 10 Exactly. CGPA, best. We should actually talk about hardwiring in these cases. I am not even gonna lie. There is a list of episodes that I've written. In that there is Chavan. फिर उसके नीचे सब क्वेश्चन है. उसके बाद एक और बार चवन है. उसके नीचे बस हार्ड वायरिंग लिखा है. साले. Yeah. बढ़िया.
Bro, the Okay. amount of knowledge, amount of talks we have had about hardwiring, I am pretty sure we could have written a New York bestseller. True, true. That is there. That's we will have everything there. A new book completely bestseller. Easily. पूरा वो एक book रहेगा that I'll recommend after reading the first book that I suggested. Uh, हार्ड वायरिंग के बारे में सीखो कुछ नहीं. yes, Yes. So true. that is Yeah. one thing. I was recently reading this book, very famous it is, The Alchemist. I think you saw this thing. Hmm. It is a very small book, like 150 pages. Okay. Okay. And it's like a, what is it? Very, these ideas like, if you really chase your dreams, the whole universe will conspire for you and then make it happen. Like, it'll give you a push. And it also, in some way, tells that, there is something called beginner's luck. Like, you start a new game and then you're like super good at it. Super good at it. Yeah. So that is the universe giving you a push to, go ahead, pursue. Like that initial inertia, it is letting you overcome True. through that beginner's luck. So ideas like this are packaged into a story that is like, it's a fiction story, of course, Right. but yeah, it's set in some olden times, Egypt and around that area. Middle East. So yeah, that's a pretty good read if you So want. again, that's what you said, right? In this book also of the about the thinking one, Mhm. they do say, peanuts luck तू वो सब बता रहा है. Right Mm. now, imagine right now you're sitting here talking me on Discord, okay? Mm. You're talking about this. Cool. You are taking a podcast. But back then, if I would say go back 3 years back behind, Uh-huh. and I'll ask you, write the steps that will make you reach to this spot Uh-huh. on this date, Uh-huh. this day, doing this. Mm. Will you be able to do that? There is What kind of no Yeah, way. there is no way you can do that. There is Yes. no. So there is this universal energy for sure that has already destined your path to this particular point. Uh-huh. कुछ छोटी 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 फैक्टर्स मिल मिल के वो तेरे लाइफ की डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस, तेरे लाइफ के छोटे छोटे चीजें आज मिल मिल के इज व्हाट has made you True. present here, True. doing all this thing. So Yes. you wouldn't have planned this by yourself manually. Possible नहीं है. True. Sometimes it's better to let it go. Yeah. When they say better to let it go, this is what they mean. True. Don't hold everything. Hmm. अब अपने चीज हाथ में नहीं है. True. True. टाइम जाने दो, कोई बात नहीं. Yeah. I mean, these small things, when you say this one very incident comes to my mind. You remember we went shopping in West Side, Mangalore. Yeah. The day I got my first oversized T-shirt. Right. Yeah. Right. That is my favorite T-shirt till now. And now. yes, the fact that was there has changed a lot in my mind. It like sounds like such a dumb thing, like T-shirt खरीद लिया क्या हो गया? Hard wiring. Bro, I'm not even kidding. Like the amount of shit I was like, bro, I can buy this stuff. I look good. Just know, brain I know. boom. Yeah, This guy, I remember one reel of a guy dancing in an oversized t-shirt and a big baggy shorts. It was like, भाई इसकी तरह दिखना है. और कूर्ग में पूरा गेटअप मार के आया था. अमेरिका का दलाल. Yes, so this is what hard wearing is. Again, this guy, if you see, he usually doesn't spend in doing. Just a second. Yeah. Just a second. Give me a second. Yes, of course. We will be right back. Yeah. Yes, we are back. Let's go. Yep. Back. So Yeah. that is the thing. What we are talking is Me mainly and- about the hard wiring. Yes. Yeah. Mhm. So this guy, back then it was very hard to convince this guy that you can actually buy your own clothes. Like this guy was doing a what do you call internship with that. इससे बहुत पहले भी कर रखी थी, अच्छा खासा पैसा था इसके पास. But this guy was very to refrain from spending on clothes by himself. You're like नहीं कोई बात नहीं, मम्मी लेके जाएगी. भाई कब तक? No, it's not Like- about spending on clothes or like buying things. Yeah, It's more it's like buying things have for I- yourself, right? Yeah, no, have I become have I reached the stage where I can do all this? Am I like, it's like, am I Yeah. allowed to do all this? Yeah, exactly. Why were Yeah. you feeling
that is something that is called as hard wiring. It's because Yes. इस point तक repetitively तेरे लिए someone was buying you clothes Yes. and you never thought that you can actually go and buy yourself. Mm-hmm. हाँ, this thing can be done ना. मैं जा सकता हूँ, बस एक टी शर्ट उठा सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, जाके पे करके आ सकता हूँ. True, That's true. it. It's a very simple thing. लोगों को True. लग रहा है यार इसमें क्या बड़ी हम जैसे लोगों में है. Yes. Even I bought my first t-shirt myself. That was in third year or something. Oof. थर्ड ईयर में. तूने Yeah. फोर्थ ईयर में किया सेम चीज. हाँ. तो इतना डिफरेंस नहीं है. तो दैट इज वेयर मेरा फैशन सेंस ही चेंज हो गया पॉइंट. क्योंकि मेरे को पता चल गया एट दिस पावर आई कैन बाय एनीथिंग आई वांट. आई कैन लुक द वे आई वांट because I already had this decent physique of due to working out and all. So now anything I try it used to look decent or good. Hot. Yeah, it used to look good and it never like भाई ऐसा यहाँ से कमर नहीं दिख रहा है, यहाँ से पेट दिख रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं था. Easy. सब सूट हो जाता है बेस्ट. सब सूट हो जाता है इस पॉइंट पे. तो द सेम थिंग ना, इसके साथ भी ओवरसाइज्ड का ही चला. इट वाज रियली गुड. द हार्डवेयरिंग वाज समथिंग दैट वाज रियलाइज्ड बाय लॉट ऑफ अस एंड I still, everyone, whoever is listening, will have a hardware. Yeah, that they're just struggling. Yeah, that is. Yes, let's switch gears again and talk about how how much of it is loneliness, the transition from college to corporate. That's a good question because you're asking to a guy who is in Pune. Yes, that is a very targeted question. That सीधा attack कर दिया बंदे ने. Yes. About that part. That's nice. So I'd say being in hostel. अपना पूरा life कैसे थे हम लोग? We were with family, around siblings, with parents. Suddenly transitioning into a random hostel with just guys around us. And धीरे धीरे वी थॉट एटलीस्ट कि अपने है ना फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई रहेगा कि नहीं पता नहीं लास्ट ईयर तक. एंड इंस्टेड इट ग्रू अ लॉट. True. So now in these 4 years I was never felt lonely because I had some or other person around. Lonely is different, alone is different again. True. But lonely भी नहीं लगता था most of the time because कोई ना कोई रहता था. एक आवाज दो, कोई ना कोई लौंडा आ जाता था. बात करो, घूमो, कुछ ना कुछ करो. Now coming to the corporate side, I'll say most of my time is consumed by work. 70 to 80%. Let it be household work, and अपना खुद का काम. अभी the rest 20 even I am trying to fill it with extra work like gigs and all. Because I do have my roommate here who is also from NIT Surathkal, Shashank. Again, he is also living his own life, right? So you can't always bother everyone to where you want to go. Hostel नहीं है again. Same चीजें नहीं चलती है, of course. True. But to an extent चल जाती है. And I'll say it, coming to the loneliness part. Yes, it is a bit too lonely. Sometimes I do feel like pitching some idea and I don't have Vista around. Yes. Sometimes I do like talking and there's no Ishan around. Sometimes I do like talking about cameras. There's no Pira around. तो चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक आई वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. राइट नाउ आई देख पॉडकास्ट में मैं बिस्टा के साथ कर रहा हूँ, कोई और के साथ नहीं सोचा. ये भी मुझे ही आके पूछा है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चीजें एक डायनामिक बन जाती है, रिलेशन बनता है हर आदमी के साथ. आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स. सो यस, ऑफ कोर्स इट्स लोनली राइट नाउ. थोड़ा लोनली लगता है, बट राइट नाउ इट्स completely fine. It's something that can be handled. And I think frequent meets, 1-2 महीने में एक बार मिल लो is also good enough. True. एक ट्रिप प्लान कर लो एक बार के लिए, पागल जैसे ऐसे एक जगह जाके आ जाओ. मतलब वो फिर चुल ही ना रहे 4-5 महीने के लिए कि बाहर जाए. और पैसा भी नहीं रहे बैग में. पैसा भी नहीं रहेगा. But at the end of the day, I think if at night I do have सबका पोस्टर on my wall. मैंने चिपका ही दिया यार लोंडो को. Yes. कुछ नहीं कुछ. Someday if I feel actually lonely, just to be grateful कि ये लोग दोस्त थे. And we did fun stuff. It's not just that only. We did a lot of stuff. True. I think we grew each other, if not anything. वो एक चीज अच्छी है कि सर्कल अच्छी. Yes. True. Yeah. So
you can, tell us about what you're doing, or like any promotion if you want to do your website plugins or gig plugin. Hmm. So again, guys, it's there. My name is Abhishek Chavan. So I have this page called as Chavan Renders. It's on Instagram. Followers to hai nahi aate. But Ah, so you right. can you can actually increase the reach if this podcast goes to a lot of ears. Yes. And you need to this my own website that I've created looks pretty good. Chavan Renders, very minimal. करनी पड़ती है. Yes, Again, yes. the beauty of it only some eyes can capture. Yes, very true. एंड वो एक चीज़ है. Uh, प्लस कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक अगेन आई एम ओपन फॉर गिग्स. तो hmm. जॉब के बीच में कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है. राइट नाउ मे बी मैग्निमस, इफ यू रिमेंबर, राइट, Hmm. that is something that I'm still working with them. Those Hmm. people are, it's a pretty good company. Right, right. They still do treat me like a family kind of guy, and Hmm. like do keep offering me small gigs. That is the fun part about it. Hmm. And I'm not sure if I would actually continue into software side, if I should or should not. There were a Hmm. lot of questions that if I should go for further studies or should I keep working, and then the inner thing that clicks and I'm like, why start? Entrepreneur. And yes, and maybe mainly it was maybe about we should do complete another podcast about the game development. Yes, yes, very much. We should do one about game development, like what all to learn and how much we both have done, whatever we have done, and Yeah, one yeah. about hardwiring. Yeah, One more about hardware. There's a lot yes, of things we can talk about. A yeah. I lot of mean, things. of course, 4 साल यही किया, यही तो किया है. 4 साल किया है, 7 साल से ब्लेंडर कर रहे हैं, तो चीजें Yes, है. तो इतना yes. सारी चीज नॉलेज सबको ही है. बिस्टा ने भी बहुत सारी चीजें की है. Hmm. Of course. So yeah, I'll say कि software is there, and I'm also trying to get keep the hold of Blender, and I don't end up losing skills. Hmm. But that is also very good confidence कि कल भी अगर मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए, I know I can get employed in the very next second. Yes, yes. Like, Like you that. won't be on the Exactly. streets. So Yeah. main thing what I learned is if you have skills that can get you employed instantly, True. वो स्किल्स को हमेशा डेवलप करके रखो. एक Hmm. नीश होती है, पर्टिकुलर नीश होती है जहाँ पे डिमांड होता है, Hmm. उसको पकड़ के रखो. उस स्किल में उसमें स्किल अपग्रेड करते रहो. अच्छा खासा साल काम करो, महीनों काम, एंड देन यू कैन टेक रिस्क. राइट नाउ आई एम टेकिंग अ लॉट. Yeah. या सो कंप्लायंस इश्यूज भी हो सकता है, बट अगेन आई विल बी डिस्क्लोजिंग इट सून टू द कंपनी Yeah. about I mean, this. I don't think I don't think your company is like in competition with whatever you're doing. Yeah, it's not in competition, and certainly I'm not exactly earning how much they are providing. Yeah. So that is a very small number that I earn. Yeah. It's So more about you get to do what more you about like also, and exactly. a bit of Yeah, cash never hurts anybody. yeah. It also does charge for my bhel puri outside. So it's fine. Hey, vada pav. Come on, man. Vada pav. What are Hey, you yo. eating? Velpuri. Vada pav is something that I've tried very less in Pune and more in What? Hubli. That is something that means I have to go out a lot. Yeah. I mean, it is like that senior had said, भाई तुम लोग बस 2-3 बार जाओगे स्विमिंग पूल से 4 साल स्विमिंग पूल बस में. ऐसे ही होता है, ऐसे ही Yes, होता है सर. when you मैंगलोर don't, में रह के भी 2-3 बार बीच जाओगे, उसके बाद नहीं जाओगे. true, when you have it, you don't really care for it. When you केयर don't have फॉर it, इट. you're like, yeah, भाई वही चाहिए मेरे ग्रेटफुलनेस चली जाती है. को. True, true. Yes, gratitude. What is that? Gratitude and gratefulness. Very good virtues. Everybody should follow. डिफिकल्ट. Yes, Abhishek, Yep. thank you. I think we'll wrap up this one for now. Yes, And yes, this is fun anyway, talking. yes, we can just open up anytime. Okay, one more episode. Yup, always ready. Bye bye, guys. Bye bye, Chawan. Bye bye guys. Yup, see you. Bye bye.